First of all, thank you very much for watching my video. Samadhan in Hindi welcome you. Today I will represent before you a very beautiful poem and interesting poem. The name of the poem is A True Story. A True Story poem has been composed by the poetess N. Taylor. Today I will tell you the whole text which is explanation. I will explain it in both the language, in English as well as in Hindi. But before I explain it, I want to tell you about the poem A True Story. In this poem, a little child was walking along with her mother in the streets of Cavendish Square. Where is Cavendish Square? Cavendish Square is a place which is located in London. There they watched some beautiful aristocrats ladies were riding in a very beautiful chariot. This chariot was driven by some servants. They drove the chariot in a royal way. All ladies looked happy and smiling. The little girl became much impressed by their richness and convenience. She complained about it to her mother. She was sad because she was wandering in the street with her mother without a car or chariot, and there was a severe cold outside. They had no servants. The mother tried to explain her child by giving example of a small child beggar who did not eat anything throughout the day. The beggar was in a very pitiful situation. The mother told her that they were much better than that child beggar. She also told her to be satisfied with what they had. Here, a mother gave a very good and witty response to her child. Surely, the poem is well knitted and written in a very simple way. Now, I start the whole text with its explanation. The poem consists of several lines and the poem is long. So, this video may be long, but please keep watching for know the whole explanation of the poem. Now, I will start my explanation. Little Anne and her mother were walking one day through London's wide city so fair, and business obliged them to go by the way that led them through Cavendish Square. And as they passed by the great house of Lord, a beautiful chariot there came to take some most elegant lady abroad, who straightway got into the same. In these lines, the poetess says, one day little Anne and her mother was walking in beautiful and big London city. Through many business lanes, they reached at the place which name was Cavendish Square. As soon as they crossed the house of Lord Cavendish, a chariot came near them. This chariot is used for touring of some beautiful ladies far abroad. This chariot directly entered that place for riding them. यानी एक दिन छोटी एन और उसकी माँ लंदन शहर में घूम रहे थे। कई गलियों से होते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जिसका नाम कैवेंडिश स्क्वायर था। जैसे ही उन्होंने लॉर्ड कैवेंडिश का घर पार किया, उनके सामने एक रथ आकर खड़ी हो गई। इस रथ का उपयोग कुछ खूबसूरत महिलाओं के विदेश भ्रमण के लिए किया जाता था। उनकी सवारी के लिए यह रथ सीधे उस स्थान पर प्रवेश कर गई। नेक्स्ट स्टेंजा, द लेडीज इन फीदर्स एंड जेवल्स वर सीन, द चैरिट वाज पेंटेड ऑल ओवर, द फुटमैन बिहाइंड वर इन सिल्वर एंड ग्रीन, द हॉर्सेस वर prancing before. In these lines, the poetess says, after some time, some beautiful ladies entered that place with jewels and beautiful clothes. The chariot was decorated with beautiful colors all over it. The footmen who brought this chariot were in silver and green cloths. The horses attached to the chariot were prancing here and there. इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि कुछ देर बाद कुछ सुंदर स्त्रियां आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस स्थान पर पहुंचती हैं। रथ को चारों ओर से बहुत ही सुंदर रंगों से सजाया गया था। इस रथ को लाने वाले पैदल यात्री चांदी और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। रथ में लगे घोड़े इधर उधर
उछल कूद कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा, लिटिल एन बाय हर मदर वॉक्ड साइलेंट एंड सैड, अ टीयर trickled down from her eye till her mother said, and I should be very glad to know what it is makes you cry. In these lines, a question is put up by her mother. Little Anne, along with her mother, was walking gloomy. A drop of tear came out from the eyes of little Anne. Seeing tears coming out from her eyes, the mother told her that they should be very glad to know what is the actual reason of her weeping. यानी छोटी एन से, जो कि अपने माँ के साथ उदास चल रही थी, जब उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकली तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि मुझे यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आखिर तुम्हारे रोने का, तुम्हारे आंसू का असली कारण क्या है। मम्मा सेड द चाइल्ड, सी दैट कैरेज सो फेयर, all covered with varnish and gold. Those ladies are riding so charmingly there, while we have to walk in the cold. In these lines, the poet says, little Anne answered her mother to see the carriage, which was very beautiful and decorated with varnish and golden colors. The ladies who are riding on the chariot were very beautiful and charming. On the other hand, they were walking in the cold street alone. देयर इज नो जॉय इन वॉकिंग। इन पंक्तियों में छोटी एन के मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है। छोटी एन अपनी माँ को गाड़ी देखने के लिए कहा, जो बहुत सुंदर थी और बार्निश और सुनहरे रंगों से सजी हुई थी। जो स्त्रियां रथ पर सवार थी वे बहुत सुंदर और मनमोहक थी। दूसरी ओर वे अकेले सुनसान ठंडे सड़क पर चल रहे हैं। इस प्रकार चलने में कोई आनंद भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, you say God is kind to the folks that are good, but surely it cannot be true, or else I am certain almost that he would give such a fine carriage to you. In these lines, she also told her mother about God who is kind for everyone, who is gentle, but this concept was not true. God should help us, at least he should provide a fine carriage for her. यानी इन पंक्तियों में छोटी एन अपनी माँ से ईश्वर के बारे में शिकायत करती है कि ईश्वर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उसकी माँ ने बताया था कि ईश्वर सभी के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट सच नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर सभी के प्रति दयालु होते तो उनको भी कम से कम एक गाड़ी तो अवश्य मिलता, एक रथ उनके लिए भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, लुक देयर लिटिल गर्ल सेड हर मदर, and see what stand at the very coach door, a poor ragged beggar, and listen how she a half-penny tries to implore. In these lines, the mother told her to see a poor ragged girl who is standing near coach door and begging a half-penny. इन पंक्तियों में माँ ने एक गरीब फटेहाल भिखारिन लड़की को उसको देखने लिए कहती है, जो उस कोच के ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी और आधे पैसे की भीख मांग रही थी। ऑल पेल इज हर फेस एंड डीप संक इज हर आई एंड हर हैंड्स लुक लाइक स्केलेटन्स बोन। शी हैज गॉट अ फ्यू रेक्स जस्ट अबाउट हर टू टाई एंड हर नेकेड फिट टू ब्लीड ऑन द स्टोन्स। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज, लुक एट हर फेस विच इज येलो विथ सम टाइप्स ऑफ डिसीज। हर eyes are looking very deep and dark. Look at the bony hands, it means that beggar was very thin. Anyhow, she arranged few rags cloth and wore it. Her naked feet got injured by stones and bleeding. इन पंक्तियों में छोटी एन की माँ उसे समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है, उसके चेहरे को देखो जो किसी प्रकार के रोग से पीला पड़ गया है। उसकी आंखें काफी गहरी और काली दिख रही है। हड्डियों वाले हाथ जो उसको दिखाई दे रही है, इससे पता चल रहा है कि वह काफी पतली भी है। जैसे तैसे उसने कुछ फटे पुराने कपड़ों का इंतजाम किया है और उसे ही पहना हुआ है। उसके नंगे पैर को देखो जो पत्थरों से घायल हो गए हैं और उनसे खून भी निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, डियर लेडीज शी क्राइस एंड द टीयर्स trickle down, relieve a poor beggar, I pray. I have wandered all hungry about this white town and not ate a morsel today.
She is crying and begging some foods from those ladies. She told them that she had been hungry and wandering here and there with empty stomach. She did not eat even a morsel today. वह छोटी भिखारिन लड़की रो रही है और उसने उन महिलाओं से जो कि रथ पे बैठी हुई हैं उनसे खाने की चीज मांग रही है। उसने बताया कि वह भूखी है और खाली पेट इधर उधर भटक रही है। आज उसने अभी तक खाने का एक निवाला भी उसको नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टेंजा। माई फादर एंड मदर आर लॉन्ग एगो डेड, माई ब्रदर सेल्स ओवर द सी एंड आई हैव स्कॉर्सली अ रेग or a morsel of bread, as plainly I am sure you may see. Her parents had been dead many years ago. Her brother was on sailing journey. She has no proper clothes and morsel of bread. You can see her pitiful condition. इन पंक्तियों में भी भिखारिन की दशा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके माता पिता कई साल पहले मर चुके हैं। उसका भाई समुद्री यात्रा पर था। उसके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही रोटी का टुकड़ा। उसकी दयनीय स्थिति को देखा जा सकता है। नेक्स्ट। अ फीवर आई कॉट विच वाज टेरेबल बैड बट नो नर्स और फिजिक हैड आई एंड ओल्ड डर्टी शेड वाज द हाउस दैट आई हैड एंड ओनली ऑन straw could I lie. She struck into bad health. There is no single nurse or doctor who can treat her. She is living in an old dirty house and there are few straw on which she can lie. माँ बताती है कि भिखारिन लड़की की तबीयत खराब है। कोई भी नर्स या डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि नर्स या डॉक्टर को उसके इलाज करने के लिए पैसे चाहिए जो कि भिखारिन के पास नहीं है। वह पुराने गंदे घर में रहती है और थोड़े से भूसे हैं जिन पर वह लेटती है, यानी कि उसके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। नेक्स्ट। एंड नाउ दैट आई एम बेटर, एट फीबल एंड फेंट and famished and naked and cold, I wandered about with my grievous complaint and seldom get aught but a scold. She is feeling better, but she is weak and uneasy. She was hungry, naked and suffering from cough. She was roaming here and there with her sad appeal. Scarcely she found some bread. She was always rebuked by the public. आज भिखारिन को कुछ अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन वह अभी भी कमजोर और असहज है। वह भूखी, नंगी और खांसी से पीड़ित है। वह अपने दुख भरी गुहार लेकर इधर उधर घूम रही है। बहुत ही मुश्किल से उसे रोटी का टुकड़ा मिलता है और उसे हमेशा लोगों से डांट ही मिलती रहती है। इस प्रकार माँ उसे समझाने का प्रयास करती है कि भिखारिन की स्थिति उसकी स्थिति से काफ़ी दयनीय है। नेक्स्ट। सम विल नॉट अटेंड टू माई पिटीफुल कॉल. Some think me a vagabond cheat, and scarcely a creature relieves me of all the thousands that traverse the street. In this line, the poetess says, there are thousands of persons who were walking at this place. Some of them did not pay attention to her miserable appeal. Some of them called her a vagabond cheater. Hardly a single person shows mercy on her. यानी माँ बताती है कि इस स्थान पर हजारों लोग चल रहे हैं लेकिन शायद ही किसी का ध्यान उस पर जाता हो। उनमें से कुछ उसको आवारा धोखेबाज कहकर भगा भी देते हैं और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति मिलता हो जो उस पर दया करता हो। नेक्स्ट लाइन। देन लेडीज, डियर लेडीज, योर पिटी बिस्टो. जस्ट देन अ टॉल फुटमैन केम राउंड एंड आस्किंग द लेडीज विच वे दे वुड गो. द चैरेट टर्न्ड ऑफ विथ अ बाउंड. Ultimately, a tall servant told the ladies with greeting that they would be ready to go wherever they wanted. After that, the chariot turned off and the road got blocked. अंतिम में एक लंबे नौकर ने महिलाओं को नमस्कार किया और वह बताया कि वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब वह यहाँ से जहाँ जाना चाहे वहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद रथ वहाँ से चला गया और वह जगह अवरुद्ध हो गया। See, little girl, then her mother replied, how foolish those murmurs have been. You have but to look on the contrary side to learn both your folly and sin. The mother told the little girl to learn something from the pitiful condition of the poor beggar. She is better than the poor beggar. माँ ने छोटी एन को समझाने का प्रयास किया
कि उसे उस गरीब भिखारी लड़की से, उसकी स्थिति से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति उस भिखारिन से काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट लाइन्स, दिस पुअर लिटिल beggar is hungry and cold, no mother awaits her return, and while such an object as this you behold, your heart should with gratitude burn. The poor girl is very hungry and suffering from cold. She has no mother like you who waits for her home return. If you feel the condition of that poor girl, your heart will be filled with a gratitude. माँ समझाती है कि बेचारी लड़की बहुत भूखी है और खांसी से पीड़ित है। उसकी तुम्हारी तरह कोई माँ नहीं है जो उसके घर के लौटने का इंतजार करे, यानी कि वो अकेली है। यदि तुम उस बेचारी लड़की की हालत को महसूस करोगी तो तुम्हारा दिल उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा, यानी कि तुम उसके प्रति कृतज्ञ हो गया होगी। नेक्स्ट, योर हाउस एंड इट्स कंफर्ट, योर फूड एंड योर फ्रेंड्स, हिज फेवर in God's to confer. Have you any claim to the bounty he sent, who makes you to differ from her? In this line, the poet says, you have a beautiful and comfortable house. You eat food timely. You have friends. You have got all these things from the grace of God. Have you any complaint for God who provides all this blessing to you? These things make you different from others. यहाँ पे माँ छोटी एन को समझाने का प्रयास करती है कि ईश्वर के प्रति उसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही उसके पास सुंदर और आरामदायक घर है, उसको समय पर खाना मिल जाता है, उसके दोस्त है, और वह सभी चीज़ जो उसको मिला है वह ईश्वर के कृपा से ही मिला है। अतः उसे ईश्वर से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो उसे ईश्वर से प्रदान हुई है, ईश्वर से मिली हुई है, ये सब चीज़ें उसे दूसरे से अलग बनाती है। अ कोच एंड फुटमैन एंड गॉडी अटायर गिव लिटिल ट्रू जॉय टू द ब्रेस्ट। टू बी गुड इज द थिंग यू शुड चीपली डिजायर, and then leave to God all the rest. This is the last section of the poem. In these lines, the poet says, you see a coach, many servant, glorious house or short-lived. They made us enjoy it for some days only. A good heart is better than all worldly things. So don't think foolishly and leave all your concern on God. God is merciful and of tender behavior. He makes all good and blessing. इन अंतिम लाइन पे माँ छोटे एन को समझाने का प्रयास करती है कि तुमको यह बात पता होनी चाहिए कि कोई गाड़ी, नौकर या शानदार घर, ये सभी अल्पकालिक होते हैं, यानी कि इनका आनंद कुछ दिन तक ही मिलता है, लेकिन अगर व्यक्ति का दिल अच्छा हो तो वो सभी सांसारिक चीज़ों से बेहतर है। इसलिए मूर्खतापूर्ण मत सोचो और अपनी सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ दो। ईश्वर दयालु और कोमल व्यवहार वाला होता है, वह सब कुछ अच्छा और सभी को अपनी कृपा देता है। इसलिए ईश्वर से इस प्रकार शिकायत करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इन दिस वे द पोएम इज एंडेड। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो वेरी मच। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट among your friends, and if you did not subscribe my channel by now, please subscribe my channel Samadhan in Hindi, and don't forget to press the bell icon, because it is bell icon who tells you about my updates. Now I will stop my video. Thank you very much.